ऑर्डर डेटेड 10/8/23 में कर ली थी। So ultimately, what are you seeking that is not granted by Janhiz Abhiyan? What are you seeking? What direction are you seeking in this petition? Millat, I am seeking that Millat, the policy issued by the state government is completely inconsistent with the article. May kindly read article 56. Is it contrary to the judgment of the Supreme Court? Millat, I am saying that this policy is The policy, what is it? What does the policy say? policy Millat P2. Tell us in nutshell, what does it say and what are you seeking? P2 Exclusion of EWS. no, exclusion of OBC SC. EWS of OBC, SC and ST. Millat, may kindly see page number Mr. Thakur, 44. what are you seeking? Millat, I am seeking that Millat, the aims and object of the amendments, the article 15(6) and 16(6) specific provide this benefit to each category. We can't see the article. No. So what is happening? Millat, this policy is excluding to the Excludes whom? SC, ST, OBC From from benefit of the EWS. all SC, ST, OBC excluded. Yes, Millat. Let's see that clause. Millat, we can't see the page number 44. 44 years. विषय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की Where are you reading? मिलट सब्जेक्ट है भारत सरकार द्वारा 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS of OBC. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी EWS. EWS benefit provide only the general class who are not covered with the existence. EWS से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर means EWS category in OBC. That's the heading. और यहाँ पर मेरा जो बताया गया अपन इंजून ऑर्डर है, इसमें देखिए पैरा 2 को देखिए, पैरा 2 को देखिए, इसमें कहता है राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ब्रैकेट में EWS जो संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक F दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया जाए। यहाँ पर मीनिंग व्हाट मतलब कि जो ओबीसी, एससी और एसटी हैं उनको जो है EWS जो रिजर्वेशन है उससे अलग एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा है और उनको अलग किया जा रहा है कि आप गरीब भी हो फिर भी आपको EWS का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो है लिखा तो grievance
ग्रीवांस ये है माय लॉर्ड कि जो गरीब हैं उनमें जब प्रत्येक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, प्रत्येक कैटेगरी में, जैसे सपोज कीजिए एससी का 15% है, तो 15% में जितने लोग आते हैं उसका 10% उनके गरीबों के लिए होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स में जितने आते हैं उनके 10% उनके उनके उस वर्ग में जो ये गरीब कहा है, मैं मैं ये वही बता रहा हूँ। ये इसमें देखिए, इस क्लॉज में ये कहा है कि जो एससी एसटी ओबीसी ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, उनके अलावा जो पिछड़े वर्ग के हैं, नहीं आर्थिक से कमजोर हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दी जाए। मैं इसमें देखो अमेंडमेंट इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें अपन देख रहे हैं कि जो अपन इम्प्यून्ड आर्डर P2 है, भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला है इन आर्टिकल 15 द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड नेमली 6 nothing in this article or sub clause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 29 shall prevent the state So from this is making- article, language of article 15. What have they done by this notification? मैं ये कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कर रहा, मैंने वही तो पढ़ लिया शब्दों क्या करेगा संविधान में जो जोड़ा गया है। इसमें अपन देखिए, इसमें कहा कि प्रत्येक कैटेगरी को 10% दिया जाएगा, अधिकतम 10%। 10 वो ही मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें बी में देखें, any special provision for the advancement of any economic weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 and 5 in so far as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state or other than minority educational You see, institution we referred are to in conscious clause 1. of, we are conscious of article 15 provides. इस notification से क्या हो रहा है जो आपको grievance है? मैं ये कह रहा हूँ, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है लास्ट में, अपन लास्ट पर लाइन देखें कि in addition to existing reservation subject to the maximum 10% of total seats in each So category. first and foremost, please tell us what has happened and हाँ, what are you मतलब aggrieved by? ये कैटेगरी माइलॉट ये कह रहा है कि इस कैटेगरी को हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा एससी एसटी और ओबीसी के जो कैटेगरी है इनको हम अलग करेंगे, इनको हम ईडब्ल्यूएस। एक बात बताइए, एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी को स्टेट में रिजर्वेशन है कि नहीं है? इससे पहले था कि नहीं था? है ना? था ना? इसमें 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी दे दिया है, आपका लिया नहीं है। आपकी कैटेगरी में से एससी एसटी कैटेगरी में से 10% यहाँ नहीं शिफ्ट किया। नहीं वो नहीं, वो इशू नहीं। एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जी। एडिशनल 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैज बीन क्रिएटेड। तो व्हाट इज द ग्रीवेंस? मैं यही बता रहा हूँ, इसमें जो ईच कैटेगरी जो लिखा है, जैसे महिला रिजर्वेशन है, ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन पहले चला आ रहा था, इसके बाद में महिला रिजर्वेशन दिया गया, तो उसमें प्रत्येक तो आप चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी में से 10% काट दें? नहीं, हम काटने दें, मतलब उसमें से हम ये चाहते हैं कि जो ओरिजेंटल है, ये जो दो रिजर्वेशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय इंदिरा साहनी केस में कहा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एससी एसटी आप ओबीसी चाहते क्या है? ग्रीवेंस क्या है? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यू आर प्रोपोगेटिंग दिस पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी एसटी और जनरल कैटेगरी। किसके बिहाफ पे पिटिशन फाइल करी? मैं इस बिहाफ में हूँ। ये प्लीज टेल अस इन 3 कैटेगरी में से किसके बिहाफ पे करी है, देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट योर आर्गुमेंट। माय लॉर्ड, मैं इसमें जो है ओबीसी एससी एसटी तीनों जो रिजर्व कैटेगरी हैं, मैं उनके बिहाफ से जनहित याचिका। अच्छा, उनकी रिजर्वेशन में कोई कटौती हुई नहीं, लेकिन उसमें भी माय लॉर्ड जो आप चाहते हैं कि ये 10% भी उनको दे दें? नहीं मैं जनरल को कुछ ना मिले, 10 जनरल बैकवर्ड क्लब इकोनॉमिकली वीकर। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुना जाए, आप अपने शब्दों को हमारे से मत देखिए, आपके सभी हमें सब समझ आएगा जब हमें आपकी बात समझ आएगी। हाँ माय लॉर्ड, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रही है, जी इन्होंने 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दे दी। माय लॉर्ड, सवाल है इकोनॉमिक वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? दैट विल बी सीन लेटर। यू आर चैलेंजिंग कि 10% उनको क्यों दी? नहीं, मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ। फिर क्या चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो है वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ताकि ये भी आप में मर्ज हो जाए एससी एसटी और ओबीसी में। फिर सब वर्टिकल ऑलराइट, हाउ मच इज द रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी? माय लॉर्ड, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ लिया कितने जाए। परसेंट है? माय लॉर्ड, जो इशू हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का है, पहले अपन उसको समझ लें तो अपन बात समझ में आएगी। जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो अपने कैटेगरी में होता है, प्रत्येक कैटेगरी के लिए।
हॉरिजॉन्टल जो होता है उस कैटेगरी के अंदर, जैसे महिला रिजर्वेशन है, विकलांग रिजर्वेशन है, एक सर्विसमैन रिजर्वेशन होता है। तो एक सर्विसमैन कोई भी हो सकता है, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, जनरल हो सकता है, तो प्रत्येक कैटेगरी में होता है। महिला रिजर्वेशन महिला सभी कैटेगरी में होती है। महिला रिजर्वेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, प्रत्येक कैटेगरी में होते हैं। तो इसी तरह गरीब भी प्रत्येक कैटेगरी में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल में होते हैं या एससी में गरीब होते हैं, ओबीसी में ऐसा नहीं, गरीब सभी कैटेगरी में होते हैं। तो ये भी जो है ये हॉरिजॉन्टल लागू होना चाहिए, ना कि वर्टिकल लागू होना चाहिए। इसमें किसी कैटेगरी को कहना तुम। और ये बताइए, अगर हॉरिजॉन्टल लागू करेंगे तो जनरल कैटेगरी के गरीब कहाँ जाएंगे? 10% उसके उनके जितने अनरिजर्व सीटें हैं उसका 10% उनके गरीबों के लिए होगा ना। उन 10%। जनरल में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, तो जनरल में से 10% कैसे रिजर्व करेंगे? वही बताया, जैसे महिला रिजर्वेशन है, महिला जो रिजर्वेशन होता है उसमें से महिलाओं के लिए जो है अनरिजर्व महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यही है। तो इसमें तो यही हुआ ना कि जो आपका एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है, फॉरगेट अबाउट जनरल, उसका 10% गरीबों को दो, 90% अमीरों को दो। नहीं, मतलब प्रत्येक कैटेगरी में जिस तरह से महिला को प्रत्येक कैटेगरी में दिया जाता है। वो 90% चले जाएंगे जी, क्रीमी लेयर में आ जाएंगे 90% आपके हिसाब से। नहीं क्रीमी लेयर 90% देखिए, एससी कैटेगरी में सपोजिंग देयर इज 10% रिजर्वेशन, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिक्स करते हैं, नहीं सर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स नहीं होता है। वो जो अल्टीमेटली मिक्स हो, मिक्स नहीं होता है। मतलब समझे बात को ना, वो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो वर्टिकल के अंदर होता है, विदिन होता है, वो अलग से नहीं होता है कि so उसको that means in that vertical there will be 10% economically weaker, 90% creamy layer. नहीं क्रीमी लेयर की कोई Obviously 10% अगर weaker हुए तो 90% is not weaker. क्रीमी लेयर का इशू सिर्फ ओबीसी में है, और ओबीसी में क्रीमी जो लेयर SC ओबीसी में है। SC ST में भी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है there can हाँ, be a creamy layer. यही बात इसी के साथ रोड आए कि एससी में जो पहले से रिजर्वेशन लेकर के काफी पदों पे पहुंच चुके हैं, उनका इकोनॉमी का स्तर अच्छा है, अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा पा रहे हैं। और उसमें जो गरीब हैं उनको भी उनकी बात किया जाता है, उनका 10% कम से कम उनके गरीबों के लिए होना So चाहिए। that is covered by the judgment of the Supreme Court. तो इसमें आप यहाँ पे क्या नहीं लेंगे? माइलर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एससी के गरीब हैं या एसटी के गरीब हैं या ओबीसी गरीब हैं, उनको आप ईडब्ल्यूएस के में अप्लाई करें, इसके सर्टिफिकेट नहीं दिया, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है कि आपको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाएगा। मेरा ये कहना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एज इट इज सेग्रीगेट हो जाएंगे। कौन सुप्रीम कोर्ट जो नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ जमीन, मैं ये तो स्पष्ट करा ना, ये जो पॉलिसी है हमको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने का। जनहित अभियान में बिटवीन क्रीमी लेयर, जनहित अभियान में जो है था उसकी वैलिडिटी चैलेंज थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो संविधान संशोधन हुआ 103वां ये वैलिड, ठीक, उसमें इसके अंदर वो किसको लागू होगा नहीं लागू होगा वो इशू नहीं था। और इसमें जो लिखा गया प्रत्येक कैटेगरी में, इसमें अपन दूसरी बात देखें, स्पष्टीकरण इसमें देखें, स्पष्टीकरण और स्पष्ट कर देता है। आप 15(6) के नीचे स्पष्टीकरण जोड़ दिया, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल इन आर्टिकल 16 इकोनॉमी वीकर सेक्शन shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicator of economic disadvantage। सिर्फ फैमिली इनकम और अदर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ही लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें कास्ट को जोड़ दिया कि आप ओबीसी एससी एसटी कास्ट के हो, अगर कम्युनिटी के हो तो आपको नहीं स्कूल लिया जाएगा, जबकि स्पष्ट करता है वहां पर दो ही क्राइटेरिया पर बनाई जा सकती है।
ये भी 2022 का ही है। Yes. Yes. Article 56. 56 is only for the classes, those are not covered in class 4 and 5. 15-6. For the already reserved classes. Minor. This resolution was not enacted for the purpose of reservation in already reserved classes SC, ST. No, madam. EWS रिजर्वेशन गरीब के लिए आया है। के लिए जो other नहीं, minor. in 4 and 5. माइनर उसका अपन शब्दों को देख लें क्या लिखा है। Firstly, the challenge would have to be made to 15-6. That has already been applied by. My lord, that is my. And then you see, I'm not challenging. State of Punjab versus Devinder Singh, recent judgment of Supreme Court takes care of this aspect. क्या कहा गया मैंने? और creamy layer वाला जो है, मैंने 7-judge bench of the Supreme Court. मैंने Take down the citation. Please take down the citation. मैंने मेरे पास अभी तो नहीं है। 2024. Classification वाला। 2024. This is State of Punjab versus Devinder Singh. 2024 SCC online, Supreme Court 1860. This deals with this aspect of क्लासिफिकेशन से संबंधित है। classification within SC, ST, OBC Yes. of creamy layer. Yes, madam. Please examine this. Yes, yes. This is, you see, My lord, one second. Ultimately, what you are proposing is a very laudable object. जो आप amendment मांग रहे हैं, Amendment, I'm not seeking amendment. I'm Hey, seeking hey, implementation you of are the Article Mr. 15. You are Mr. Vinayak Prasad sir. Vinayak Petition. Prasad sir. Mr. Shah. Please don't take it that what we are saying is against you. We I'm want not to saying one second, Mr. Shah, सुन तो लो। हर चीज ये नहीं होती कि जज सवाल पूछता है तो जवाब देने चाहे आपके हक में कुछ बोल रहे हो। आप बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं, नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। Don't do that. Your prayer that you are seeking in the amendment, आपने amendment लगाई है। Don't say मैं amendment नहीं मांग रहा, आपने amendment application लगाई है। उसकी prayer देखिए जो आप ऐड करना चाहते हैं। Does that arise from this argument? अभी वो allowed है। It's an innocuous prayer. Please look at the prayer. Declare that the circular, to the extent of excluding economic weaker section of OBC, SC, ST from issuing an EWS certificate. Are they saying no to an EWS certificate? Ultra virus to Article 15.6 and 16.6 of the Constitution of India. To To the extent of excluding the economic weaker section of OBC, SC, ST from the issuing EWS certificate. My lord, So EWS certificate has got nothing to do with caste. वो तो weaker वो position देख के होती है। आपके पास 2 सर्टिफिकेट होंगे, कास्ट का और EWS का। नहीं दिया जा रहा, मैं यूं ही मैं कर रहा हूँ। कहाँ इन्होंने मना किया आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसमें कहाँ दिया एग्जैक्ट P2 में देखा जाए, मैंने जो इसमें मैंने बताया वो लिखा गया स्पष्ट वो नहीं है। इसके बाद सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा था, इसी में पेज नंबर 48 पे देखें, P2 में ही है। P2 में? हाँ, P2 में जो सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से अगला पैरा लिखा है, पैरा 2 में कि आप OBC SC ST के नहीं है तभी आपको दिया जा रहा है। श्री स्वर्ण सो जाति के सदस्य जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। You see, we are all on the same page, but we are all on the same page looking at it from differently. My lord, ये जो फॉर्मेट Mr. Singh, you see, how can you link economic status of a person and deny him an EWS certificate if he belongs to a particular caste or community? Because one is a financial status that determines the EWS category or a creamy layer. That has got nothing to do with the background, caste or tribe or region, religion of a person. It's his economic status. So you cannot
deny certificate to anybody on the ground that you belong to a particular, that would be discriminatory. Ultimately, whether there is reservation in job, reservation in employed is a separate category. But insofar as certificate is concerned, that this is your financial status, that can't be denied. Then whether that person is entitled to benefit or not is something different. But you can't say that if you are an OBC, SC, ST, we will not determine whether you are economically backward or not. That in fact runs counter to the judgment of the Supreme Court now, which says that there can be a distinction within that class of a creamy layer and non-creamy layer. So you have to take instructions on that aspect. I'll seek instructions, but there are concepts like below poverty line, above poverty line. Yes, so there is a concept in this. If you look at this circular, this lists out category. जिसके पास 5 एकड़ या अधिक भूमि है, जिसके पास 1200 वर्ग फुट या जिसके पास नगर पालिका में इतने, these are excluded. So this has got nothing to do with his history or his position to a particular. I will seek instruction, but my lord, that flows from article. My lords have pointed out 15. Oh, you see, 6. Like BPL card. You issue BPL card. Do you look at the caste religion? Because that is not flowing from article 15. That's right. So EWS, economically weaker section. My lord. Person belonging. What is the parameter of an EWS? If we read EWS, regardless of the origin of that word from article. You see, there are two things. One is reservation for the particular category. We are not looking at reservation at the moment. We are looking at classification of an individual based on his financial status. My lord. BPL is one way of doing it. EWS has a direct relation to financial status. Nothing to do with sex, caste, creed, religion, tribe, or region. This particular word has been coined pursuant to the amendment made in the Constitution of India, my lord. Yes. And therefore, my lord, I will seek instructions, but this is only my submissions. Because it doesn't seem to logic that you will say that if you belong to and say SC, you cannot be in EWS. My lord. That's got nothing to do with this financial status. My lord. So their grievance, one of the grievances. EWS certificate otherwise would be of no use except for the purpose of profession, employment and education. Somebody may say, all right, we do not give any reservation to any. It could be a private organization. Private organization may say, we don't want to give reservation to SC, ST, OBC, but we want to give reservation only to an EWS. This would deprive them of even that certificate. There's no link. No. Unless you are saying there is a link because you belong to a particular caste, you are creamy layer automatically. One of the grievances, if you are denying EWS certificate to an SC, ST, OBC, you are assuming that they are above a particular level, which is again contrary to the very concept of EWS. No. So please take instructions at least on this aspect, and you also examine the judgment of the Supreme Court. It is covered with that, and if we can find a solution, probably this will be it. Learned counsel for the petitioner submits that one of the grievances of the petitioners is that persons belonging to SC, ST and OBC are being deprived from even applying for a economically weaker section certificate. He submits that the inclusion of a person in an EWS category has got no relation or nexus with his background in terms of his caste, tribe, region, religion, or sex. Learned counsel for respondent prays for some time to take instructions as to whether an EWS certificate could be issued to individuals irrespective of based purely on their financial status and irrespective of their background in terms of caste, creed, tribe, religion, or sex. I'd request list after 4 weeks. Similar, some of the also identical case pending. We can't link along with this petition. Sorry? 4 petition is also pending in the EWS. When is that coming up? What is the number? Number 13972 2021.
223892 30853 2023 14568 2021. So why duplicate? Why have 7 petitions for the same? Everybody comes up with the same idea. अलग अलग भर्तियों से संबंधित पूरे कैंडिडेट्स हैं इसमें और Maybe let's not link it with that. We'll see. उनको अलग देखें. List आपको होगा. किसी में जवाब भी आया है तो इसमें Doesn't matter. Main relief is covered. Supplementary relief you are seeking. If they come back and say we'll issue a certificate. इसमें एक ही Petition is over. जो इसका एप्लीकेशन है रिजर्वेशन का ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है, ये वर्टिकल कर रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल है इसका, तो वो इशू भी इसमें चैलेंज है कि जो पीएससी के रिक्रूटमेंट है, We'll see. टीचर भर्ती वाले हैं, तो आउट ऑफ 100 में से 10% एलोकेट किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए अनरिजर्व में से 10%. दैट इज अप्लाई हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली. दिस इशू इन्वॉल्व इन दिस पिटीशन में got the number of post That we'll consider when they come. तो दिस पिटीशन में can't deal link along No, with no. अभी इसमें छोटा इशू है, इसको इसी में डील करेंगे. Then we'll see. ठीक है तो बिग कमेंट से करते हैं. Then it will come up after 4 weeks. Bill number 15, Sri Shafiqullah, Sri Shreyas Pandit. I filed the amendment application yesterday. It's I number 18944 of 20. What is the amendment you're seeking? तो एप्लीकेशन हमने मूव की थी फैमिली पेंशन